Good evening, everyone. Welcome to BYJU'S exam prep. My name is 𝗟𝗲𝗴𝗋 and I'm very sorry for the delay. Can you hear and see me clearly, everyone? There was some technical glitch. I am so sorry for keeping you waiting. Today is a very important session. I am going to be discussing the main theme of the passage. I'm sure a lot of you have been waiting for this session for really long. तो एक बार जल्दी से टेक चेक कर दो, बता दो if I'm clearly audible and visible to everyone. Yes. Good evening. Yes, I'm clearly audible and visible. ठीक है. So एजेंडा क्या है आज के सेशन का? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. I focus, I pay attention, and I want you to do that as well to this topic the most. When you solve RCs, सबसे important perspective आपका ये ढूंढना होता है. ओके? क्यों होता है? क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट है? पूरे इंग्लिश के सेक्शन में सब मैं आपको समझाऊंगी धीरे धीरे. एक बार एजेंडा देख लेते हैं. सेशन का क्या है? एजेंडा है that we learn how to identify the main theme of the passage, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक पैसेज पढ़ेंगे, उस पर अप्लाई करके ढूंढेंगे कैसे मेन थीम ऑफ द पैसेज ढूंढते हैं. ओके, एंड बिफोर वी स्टार्ट, CLAT ने अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है. वी आर गोइंग टू बी डूइंग एन एनालिसिस ऑफ इट, नॉट merely solving the paper, remember, but taking cues from it and knowing actually अब 2024 CLAT में क्या आ सकता है इस सैंपल पेपर को देख के. So remember, you have to attend this session. It's going to happen on Saturday. The timings will be disclosed to you very shortly. मिस मत करना, इस सेशन को जरूर अटेंड करना है. सिर्फ सॉल्विंग नहीं होगा. देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टेक होम फ्रॉम दिस. बिल्कुल मिस नहीं करना. तो बात करते हैं मेन थीम क्वेश्चंस की, और ये देखते हैं कि ये मेन थीम क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसको समझना हाउ इज दैट very necessary. Raman, we've taken a few sessions on discussing how to improve mock scores. Make sure you watch them. It's there on our YouTube channel. Abhimanyu sir has taken one. Nivedita ma'am also has taken one. Most of us have taken them. Make sure you watch them. So if you look at the English section of CLAT, you precisely get 5 to 6 RCs in this section. Okay. Now, क्योंकि थोड़ा marks weightage कम हो गया है English का 2024 में, I'm assuming 5 RC आने चाहिए. 5 RCs होते हैं predominantly. There are a few here and there grammar and vocab questions, but they are also dependent on RCs. And your ability to answer most of these 25 questions correctly highly depends upon your ability to identify this. अगर ये आपको समझ में आ गया पैसेज में इन शॉर्ट, तो आपके लिए बाकी सारे क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत इजी हो जाता है. इफ यू कम टू माई बैचेस, आई बीन टेलिंग यू दिस इन दी मॉक के जो सोल्यूशंस है, जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड करती हूँ, उन सोल्यूशंस में भी आई टेल यू, देखो बच्चे, ये क्वेश्चन आप मेन थीम से आंसर कर सकते थे इवन इफ इट वाज नॉट अ डायरेक्ट मेन थीम क्वेश्चन. सो मेन थीम एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको, अगर आप एक पैसेज को पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू हैव to know the main theme of the passage. बाकी सारी चीजें अपने आप दे fall into place और सब कुछ बहुत आसान हो जाता है. तो मेन थीम क्वेश्चन तो डायरेक्टली आते ही है, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं. आपने देखा होगा सैंपल पेपर में there was a title based question. Title is nothing but asking you the main theme only. And CLAT is very likely to give you 3 to 4 at least direct questions on asking you main theme. तो सोचो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स डायरेक्टली आपके पॉकेट में 25 मार्क्स में से. और इसी पे डिपेंडेंट आपके टोन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसी पे डिपेंडेंट आपके इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आप आंसर कर सकते हो इफ यू नो द मेन थीम. एंड दैट्स व्हाई आई हाईली रिकमेंड आपको मेन थीम पता होना चाहिए. अगर तमीज से पढ़ा है पैसेज तो ये आंसर करना पड़ेगा अपने माइंड में. सो इफ यू रीडिंग समथिंग, ये ढूंढो. अब आता है क्वेश्चन, हाउ डू आई फाइंड इट? Okay, so Raman says, no ma'am, in RC my score is not so well. I'm going to answer that right here in this session today. Make sure you watch it till the end. All right. So आयल, ये मैं क्लास के एंड में या तो डिस्कस करती हूँ, या फिर एक और सेशन जहां टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम करेंगे.
तो अब आता है ये मेन थीम होता क्या है, क्यों सारे क्वेश्चंस आंसर करने में वी आर हेल्प्ड इफ वी नो द मेन थीम ऑफ द पैसेज. मेन थीम इज बेसिकली what is there across the passage. What is the overall idea, overall picture given to us by the writer. If I know the overall idea, all the questions that are dependent on the passage can be answered seamlessly because I know the bigger picture, I know the overview of the passage. That is what main theme questions ask us. And main theme questions can appear in various forms. So I'll come back to our 3 days free trial in 2 minutes. But before that, have a look at what the main theme questions may look like. तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है डायरेक्टली मेन थीम क्या है पैसेज का. प्राइमरी पर्पस भी मेन थीम पूछता है. ऑथर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद इज अनदर वे ऑफ आस्किंग यू द मेन थीम. देखो ये क्वेश्चन देख के शायद बहुत सारे लोग नहीं गेस कर सकते कि ये मुझसे मेन थीम ही पूछ रहा है, बट इट्स नथिंग बट द मेन थीम. आपसे पूछ रहा है डूड इस पूरे पैसेज में व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू टेल मी. Which of the following best describes the content of the passage? The content is what is spread across the passage, what is the main theme of the passage, and which of the following is the best title for the passage. A lot of people get confused with this. How many of you get confused with the title of the passage? When you solved the sample paper, did you get confused with the title? Or generally as well when you take mocks, do you get confused with the title? बिकॉज बहुत सा टाइटल हमको स्कूल में कुछ और कराया गया था. फैंसी लिखो, क्रिएटिव, यू नो, ओल्ड इज गोल्ड, बट दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस इन competitive exams. That is not what the author is testing here. Ultimately, the author tries to know if you have understood the passage or not. So Gauri, Swati, Android Gaming, Nitika, I'll make sure that by the end of today's session, you'll not be confused anymore with the title of the passage. Also, I'll tell you something here. This is part 1 of main theme of the passage. I'll give you a little bit of homework by the end of the class. Make sure you attend part 2 as well to be a master to it. And I guarantee you something. इस दोनों क्लासेस को अटेंड करने के बाद 90% ऑफ द टाइम्स आप कंफ्यूज नहीं होगे मेन थीम या टाइटल या ऐसे किसी भी डिपेंडेंट क्वेश्चन पे. So you have to be very religious with what I ask you to do. If you do that, I guarantee you, you'll not fail. So, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या. ये मुझे बार बार मेरी पीपीटी कह रही है बता दो 3 डेज का फ्री ट्रायल है, एक्सेस कर लो नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा. अभी भी नहीं किया है 3 डेज का फ्री ट्रायल एट बायजूस एग्जाम प्रेप फॉर क्लैट, कर लो. अदरवाइज you'll miss out on a lot of time. If you want the link, it's there under my video in the description box. So, what exactly is the main theme? I'm going to be using a few terminologies to discuss that in detail. I want all of you to be very, very attentive with what I'm explaining, okay? As I said, main theme questions ask us the overall idea presented in the passage. Now, let me explain this from the perspective of the author. Okay, author is one who is writing the extract, the RC. The author has an idea in his mind before he writes the extract. कुछ सोचा उसने, फिर उसने decide किया चलो I'm going to sit down and write about this. Okay, so the idea the author has in his mind that he portrays through words in that piece of paper, that specific idea in the author's mind is the main theme. वो स्पेसिफिक आइडिया जो ऑथर के दिमाग में है. अब ट्रिक ये होता है कि मैं ये को ढूंढूं कैसे, कि ये मेन थीम मुझे कैसे पता लगेगा. ठीक है, सो लेट्स delve deeper into it. I've understood that main theme is nothing but the author's idea, and that idea is portrayed into the RC. Let's take an example. अगर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूं about the health benefits of eating sugar, ठीक है, I believe sugar खाना is very healthy. जलेबी खाओ, हलवा खाओ, रबड़ी खाओ, it's very healthy. I believe that. That's my belief, the idea in my head, and I sit down to write about how eating sugar is going to make you healthy.
Will I write the entire passage to convince you of my belief? Yes or no? That sugar is healthy? Will I write the entire passage to convince you that, dude, agree with me, that sugar is healthy? Yes, I am. So, Garima, in another way, in another set of words, we can say that if the author has a strong belief across the passage, the author will try to convince us of his belief. If the author thinks pressure cooker में खाना पकाना is healthy, it's his strong belief, and across the passage he will portray his belief, convincing you. इसका मतलब एक पॉइंटर और आता है that the author's belief will be a very important segment of the main theme of the passage. If at all there is a belief. दो तरीके के passages होते हैं जब हम solve करते हैं. एक passage होता है where the author has no opinion. जैसे stories, याद है शर्लॉक होम्स, ठीक है, या कोई और स्टोरी जैसे मर्डरर को ढूंढना था, दो ट्विंस थे. All of these are previous year CLAT stories. There the author has no opinion. There the main theme will be different. But if the main theme, if the story, if the article has personal opinion by the author, then this belief or opinion becomes primarily the most important thing for us. And we have to focus on that. So when we try to identify the main theme, let me write down a few pointers to you that you have to keep in your mind. First, always pay attention to the beginning and the end of the passage. 90% of the times ये approach आपको help करेगी main theme ढूंढने में. तो आज के बाद एक चीज promise yourself, write it down, बड़ा बड़ा चिपका लो अपने wall पे. If I am reading anything for English or critical reasoning preparation, I will reread and pay special attention to the first 2-3 lines and the last 2-3 lines. 90% of the times, this is a very low-hanging fruit. 90% of the times, you'll be able to pluck it. You'll be able to find your correct answer in a combination of these two. आपने बहुत सारे passages पढ़े होंगे एडिटोरियल्स में जहां ऑथर स्टार्ट करता है एक जेनरिक इंट्रोडक्शन के साथ और एंड करता है एक सजेशन के साथ कि ऐसा ऐसा गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये नया बिल पास कर दिया, उस बिल को और थोड़ा स्क्रूटिनी करना चाहिए, है ना. तो अगर मुझे मेन थीम ढूंढना है तो मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बताना पड़ेगा that a new bill has been passed and suggestions given by the author. So I'll reiterate, always pay a lot of attention to the first few lines and the last few lines. That will help you identify the main theme. But remember, that doesn't happen always. I'll give you an example of the recent sample paper that we have seen. The main theme wasn't visible in the first few lines and the last few lines. उसको कैसे approach करेंगे वो next page में बताऊंगी. एक बार इस pointer को discuss करते हैं. I'll use my favorite word here, तमीज. I'll first say this in Hindi and then say this in English because that's my lingo. अगर एक passage तमीज से पढ़ा है, उसको टाइम दिया है और मेन थीम क्वेश्चन आ गया और आपके मन में अर्ज आया कि वापस जाके एक बार चेक कर लेता हूं आंसर क्या है, उस पैसेज को वहीं छोड़ दो. अगर तुम्हें एक बार में मेन थीम नहीं आया, तुम्हें 2 बार में भी नहीं आएगा, 3 बार में भी नहीं आएगा, you'll be wasting your precious time in the paper. Leave the passage then and there. So I'll reiterate that in English. If you've read the passage very carefully at one go, you have to know the main theme. Main theme questions don't require rereading of the passage. If you have an urge to reread the passage, you wasted your time utterly, leave the passage then and there. You'll be wasting more time again and again. If you haven't got it in one go, you wouldn't get it in 2 or 3 times as well. So leave the passage then and there. But if you've read the passage once carefully, you have
to know by the end, okay, this is what the passage is about. So let's dive deeper into what are the few things I have to keep in my mind that will help me find the answer to the main theme passage. The first is going to be reading the first few lines and the last few lines. The second is going to be answering, but before that, we have a free workshop happening on 13th of August, 6 p.m. where Nivedita ma'am is going to be talking everything in and out about CLAT. Do not miss out on this workshop. Bookmark kar lo, register kar lo jaldi se, 13th of August, 6 p.m. Very, very important workshop. Everyone and anyone, even your parents can attend it. Make sure you attend that. तो अभी हमने क्या क्या देखा? पहला, I'll write that in first and the last few lines. They are really, really important for us. ठीक है? फिर हम आते हैं keywords पे. This is something that we've been practicing. Exactly. If you understand the passage, you automatically know the main theme. Yes, Manu. Ma'am, do we read the questions first and then the passage? That's helpful or just time waste? Garima, every child has a different technique of reading the passage. Okay. Over the years of experience that I've had, a lot of kids, it's like a 50-50 thing. A lot of, yes, Gauri, a lot of people are benefited by reading the questions beforehand. Specifically AILET जैसे एग्जाम्स में जहां क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल होते हैं, बट CLAT में क्वेश्चंस are not very factual. You don't get very direct questions. You get inference based questions, main theme, tone, title based questions. So in such a case, a lot of people spend a lot of time reading the question options and then eventually आप वापस आके क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे ही. So it doesn't help a lot. और अगर आपकी एक्यूरेसी डिसेंट है, अगर आप, और इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी जहां आप 5 में से 4 पैसेज तो सर्टेनली पढ़ के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर करोगे, तो आपके लिए बिल्कुल नेसेसरी नहीं है क्वेश्चंस पढ़ना. आप एक डिसेंट लेवल पे स्टैंड करते हैं where you don't have to fuss about what exactly is the question. आपको most of the passage समझ में आ जाएगा, आप most of the questions को correctly answer कर देंगे. So I hope I was able to answer if the questions should be read beforehand or not. Give this a try in your mocks. एक mock में practice करके देखो if it works for you or not. 2 mocks में करके देखो. If it still does not work for you, give it up. But if you think you're benefited, go ahead with that. Back to main theme. Keywords ढूंढना is something we've been practicing in the classes. Keywords क्या होते हैं? जब स्कूल में हम कोई बुक पढ़ते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक होती है, हम पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करते हैं ना? क्या होते हैं वो वर्ड्स? Keywords. कौन से होते हैं वो वर्ड्स? The words that are important in the line, not because I don't know the meaning of them, but because these words will help me grasp the context of the passage, the theme of the passage. In short, ये वो words होते हैं जिनके बारे में वो पूरा पैराग्राफ बात कर रहा है, मैं उनको वहीं अंडरलाइन कर लूंगी. Since you have an offline paper, अंडरलाइन करना आपके लिए बहुत इजी होगा. आप हाईलाइट भी कर सकते हो when you take the mock online. So when you read every paragraph, हर पैराग्राफ में एक दो ऐसे वर्ड्स हाईलाइट करते रहो जो आपको बताएंगे अच्छा पूरा पैराग्राफ इस वर्ड के बारे में है, पूरा पैराग्राफ शुगर के बारे में है, पूरा पैराग्राफ बेनिफिट के बारे में है कि शुगर ईटिंग विल बेनिफिट आवर बॉडीज, पूरा पैराग्राफ बिल के स्क्रूटिनी के बारे में, तो बिल और स्क्रूटिनी अंडरलाइन कर लिया. यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स विल बी योर डायरेक्ट मेन आइडिया. A combination of these keywords. You will find these keywords in the passage directly written. All right. Now, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मैम जहां डायरेक्टली नहीं लिखा होता फर्स्ट फ्यू लाइंस में, लास्ट फ्यू लाइंस में, वहां हम कैसे ढूंढते हैं मेन आइडिया? सो देयर इज वन सिंपल क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू बी answering that will help us eliminate close options as well. What is that? There's a simple question and that is, why is the passage written? So if you looked at the sample paper, हम अपने आप से पूछेंगे क्यों लिखा था पैसेज, क्या बता रहा था ऑथर? सिर्फ एक पर्सन की बात, 2 लोगों की बात, 2 ऑपोजिट लोगों की बात,
या इसीलिए लिखा था पैसेज। एक का बिलीव था प्रो वैक्सीनेशन, दूसरे का बिलीव था ऑपोजिशन ऑफ वैक्सीनेशन, इसके बारे में लिखा था पैसेज। अनदर एग्जाम्पल, बेनिफिट्स ऑफ शुगर। क्यों लिखा है पैसेज? शुगर के बारे में बताने के लिए, बिकॉज इफ आई राइट अ पैसेज ऑन कन्विंसिंग यू दैट शुगर इज बेनिफिशियल, आई गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ शुगर. I'll say sugar increases your energy levels, sugar helps you run faster, sugar helps you stay active across the day. But is the passage written to tell us that sugar keeps us active across the day? Or is this one of the major benefits of the passage? So we have to always answer this question, and that is, why is the passage written? So Manu says, ma'am, I usually get confused in the business economics based RCs. Manu, I'll deviate a little from the agenda. If you are confused in business and economics based RCs, I'll expect you to do a little bit of extra reading on these type of passages. You do, and I'm assuming you're certainly not somebody who belongs to commerce background. It happens. आपने जो चीज नहीं पढ़ी है, you get confused with them. And the easiest way to be okay with them is to read about them. So read articles on business and economics. The best source is the Hindu or the Indian Express. They have loads of articles on business and economics. Read from a variety of sources, read on a variety of topics. Thus, you get comfortable with a lot of areas. Back to the main theme. So, why is the passage written? ये हम आंसर करेंगे, ठीक है? अब क्लोज ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है मैम, क्लोज ऑप्शन में एलिमिनेट नहीं कर पाते. टुडेज पैसेज हैज वेरी क्लोज ऑप्शंस. ओके, क्लोज ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है, नहीं कर पाते हम आंसर. ये पूछेंगे पैसेज क्यों लिखा है, ए बताने के लिए लिखा है या सी बताने के लिए लिखा है? पहला अप्रोच तो ये हुआ, इसको हम अप्लाई करेंगे. आई रीटरेट द अप्रोच. व्हाई इज द पैसेज रिटन? टू एक्सप्लेन ए और टू एक्सप्लेन सी? The other alternative is, which one of these two options encompasses a bird's eye view? That is, अगर एक bird fly कर रही है and the bird has to look at the ground, the bird will have a holistic view of what is visible in the ground. Narrow नहीं, wider view. वो option जो passage के maximum components को encompass करते हैं, वो आपका correct option होते हैं. But remember, ये option general नहीं होना चाहिए. दो example देती हूँ. Same example हुआ, sugar is beneficial for health. ठीक है? अगर एक option हुआ sugar and its benefits, दूसरा हुआ sugar and its benefits on health. Sugar and its benefits is general. It's not a bird's eye view. क्योंकि पैसेज स्पेसिफिकली हेल्थ के बारे में भी बात कर रहा है. अब बर्ड्स आई व्यू की मैं आपको बताती हूँ कैसे. एक ऑप्शन है शुगर्स, ईटिंग शुगर विल कीप अस एक्टिव अक्रॉस द डे, मेन थीम. और दूसरा ऑप्शन है शुगर एंड इट्स बेनिफिट ऑन हेल्थ. बेनिफिट विल एनकम्पास मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द पैसेज, इंक्लूडिंग कीपिंग अस एक्टिव अक्रॉस द डे. So technically, this option becomes a subset of this option. So bird's eye view is very, very important for you. Bigger picture, my favorite word. Did you guys understand what is the bigger picture? आपको बड़ा image देखना है कि ऐसा कौन सा option है जो सारी चीजों को include कर रहा है, एक भी चीज को miss नहीं कर रहा है. It's not missing out on even a single aspect of the passage. That's the bigger picture. Did you understand the bigger picture, everyone? Send me a thumbs up. Exactly. Also, did you hit the like button? If you haven't done that, please do that right now. Thank you. Alrighty. So, bird's eye view. Last आता है argument versus premise. मैंने आपसे कहा था, if the passage has an opinion, the opinion is the argument. Premise is data that explains that argument. My argument is sugar is beneficial for health. Premise says it helps us improve our vitality, improve our strength, improve our energy levels. All of that is explanation to the argument. It supports the argument. That is premise. Do not be confused between argument and premise. If I have to identify the main theme, which one of these two is important for us? Argument or the premise?
Which one of these two is important for us? Argument or the premise? If I have to identify the main theme. Come on, give this a try. Main theme ढूंढना है तो argument ज़्यादा important हुआ या premise? It's the argument. गरिमा, premise खाली example होते हैं, description होता है. जैसे अगर author का opinion है कि ये जो नया बिल है ना, इसको scrutiny होनी चाहिए इस बिल की. क्यों होनी चाहिए? जो justification author देगा, वो premise हो गया. But claim क्या है author का कि इस बिल की scrutiny होनी चाहिए. So the claim of the author is the argument. Or verbatim, this can also be called as the main theme. तो ऑथर का क्लेम, ऑथर का आर्ग्यूमेंट, सब चीजें आपको मेन थीम बताएंगी. मेन थीम किन किन चीजों से ढूंढा जा सकता है? आर्ग्यूमेंट ढूंढ लो तो भी मेन थीम मिल जाएगा, क्लेम ढूंढ लो तो भी मेन थीम मिल जाएगा, ठीक है. ओपिनियन ढूंढ लो तो भी मेन थीम मिल जाएगा. फर्स्ट एंड लास्ट फ्यू लाइंस में अटेंशन दोगे तो भी मोस्टली मेन थीम मिल जाएगा. Okay, so if you pay attention to all of these things, and why is the passage written, इसको आंसर कर लोगे तो भी मेन थीम मिल जाएगा. So in a nutshell, that's how you'll find the main theme. Now what we're going to do is, हम इसमें will dive deeper into the theory of it in the next class, practice more in the next class also. But today I have an RC for you. RC पढ़ो, across 3 pages है. Send me a done once you're done reading the page. Question दिखाऊंगी, answer आपका homework है. You have to comment under my video as the answer. Next class में answer declare करूंगी इसका, but comment जरूर करना. I'll personally reply to you as well. Read the page and send me a done. Yes, Swati, keywords ढूंढोगे तो भी main theme मिलेगा. Read the page, everyone. There's only one question identifying the main theme here. Page 2. Page 3. Simple. Options aren't as simple, of course. अभी मैं आपसे पूछूंगी, you'll be able to tell me the main theme. ठीक है? अच्छा, one more line left. Sorry. Okay.
we've launched a new test series and बहुत सारे टेस्ट है 25 plus CLAT 15 plus AILET 15 other law entrance exam के tests. We'll be doing our mock test analysis very soon. तो mock test analysis के लिए और YouTube पे करेंगे हम ऐप पे भी. उसको अटेंड करने के लिए टेस्ट सीरीज एनरोल कर लो, जल्दी से कर लो. comes pretty cheap as well. जल्दी से कर लोगे तो बहुत सारे टेस्ट दे पाओगे. मॉक्स देना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है. डोंट बी लेट, रश अप, दैट्स द नंबर ऑफ आवर काउंसलर्स. अब ये क्वेश्चन है, ठीक है. स्क्रीन पॉज करके आराम से पढ़ना और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना आपका आंसर क्या है, ठीक है. I'll be waiting for your answers. I'll be replying to you personally. There will be a part 2 of identifying the main theme of the passage. We'll be working on that religiously. Make sure you attend that class as well. Okay, so that's the options. Detail में पढ़ना, आंसर करना. I'll give you 1 minute for that. ढूंढ लो एक बार आंसर, क्लास एंड होते ही कमेंट कर सकते हो. ठीक है. Now, oh Lord, what did I even do? Goof up. एडिट कर देंगे इसको जल्दी से वीडियो, तो कि रिकॉर्डेड देखने वाले को आंसर नहीं मिले. We have launched a comprehensive course for CLAT 24 aspirants. Make sure you register yourself sooner than later. Do not regret later on. And you should attend our sample paper analysis. That's happening tomorrow. Don't miss out on that. Make sure you follow us on all of these social media places, Instagram, Facebook, Telegram. You download our app on Google Play and subscribe to our channel if you still haven't done that. Discuss करेंगे next class में क्यों भी है इसका आंसर. Thank you so much everyone. Have a very good day.